हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज मैं आपको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जियोग्राफी के प्रैक्टिकल के फर्स्ट चैप्टर डाटा, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन, आंकड़े, स्रोत एवं संकलन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है क्योंकि अगर आपने पूरे साल तक जियोग्राफी प्रैक्टिकल को नहीं पढ़ा है तो ये आपको शॉर्ट और समराइज्ड वे में बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी समझा देगा। सो लेट्स बिगिन। डेली टेम्परेचर इंडेक्स, स्टूडेंट्स इन अ क्लास, population of a country, these all are datas. What is data? The data are defined as numbers that represent measurements from the real world. Datum is a single measurement and information is defined as either a meaningful answer to a query or a meaningful stimulus that can cascade into further queries. So, we describe more important terms further that leads to a short and summarized view of the whole chapter. So let's begin. Statistical fallacy. Fault in the statistical data and its misuse in presentation. Next, sources of data. The data are collected through primary sources and secondary sources. Primary sources: personal observations, interviews, questionnaire, schedule, field surveys, and other methods includes in the primary sources of collection of data. Secondary sources. Secondary sources are further divided into two types: published and unpublished. Published: government, quasi-government, international, private publications, and newspaper are some published secondary sources of collection of data. Unpublished: government, quasi-government, private document, and other documents are some unpublished secondary sources of collection of data. Absolute data or raw data. When data are presented in their original form as integers, they are called absolute data. Index number shows change in variables such as population growth rate for a particular decade. Cumulative frequencies (CF) obtained by adding successive simple frequencies. When we add successive simple frequencies as 4, 9 and 12, these are the frequencies. Then 4 plus 9, 13 plus 12, 25. So 4, 13 and 25, these are the CF table. These are the cumulative frequencies. So obtaining by adding successive simple frequencies is the cumulative frequency denoted by the CF. And we know simple frequency is denoted by the F, and sigma F, that is the sum of all simple frequencies. The last CF or the last cumulative frequency is the sum of all frequencies, sum of all simple frequencies. So next, frequency polygon. Now we go on to the graph, the graphical representation of the data, which make it more simple and more easier and more faster to understand the data. So first of all, frequency polygon. A graph consists lines and bars representing frequencies is known as frequency polygon. A simple graph with bars and lines. It can also be used for comparison basis between any two types of data. Next, less than ogive. Less than ogive. Ogive is what? When we plot cumulative frequency in a graphical representation, it makes an ogive. Simply. So less than ogive, it is a simple line graph formed by plotting cumulative frequencies. If we obtain any data with particular frequencies and find the cumulative frequencies of the data, then if we plot in a simple line joining all the points, a simple line graph, this is the less than ogive. More than ogive. It is also a simple line graph formed by plotting frequencies in more than table. और more than table कैसे फॉर्म होती है ये आपको बताता हूँ। more than table आपको फॉर्म करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ, उसको हर पर्टिकुलर सी एफ के साथ माइनस करना पड़ेगा।
ऐसे 4, 9 और 12, सम कितना है 25। सो मोर देन टेबल कैसे बनाएंगे? 25 माइनस 4, 21, 21, 25 माइनस 9, 16, and 25 minus 12, 13. So 21, 16, 13 is our more than table, and by plotting simply in a line graph pattern in the graph we can obtain more than origin. And in a graphical representation of the data, it is very important to take care of scale, title, legend, labelings, perfection and uniformity, because these all have marks in the paper. So let's begin a descriptive or a more explanation or further explanation of important topics and important headings, subheadings in the chapter. Let's begin. All the short notes which I make in a summarized form are in front of you all. You can note that all point. Easily appear तो हो रहा है ना? Yes, let's begin. So, data are tabulated and processed to extract meaningful information from them. मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो है वो अपने पास ले लीजिए, क्योंकि मैं लाइन वाइज टॉपिक से चल रहा हूँ. आप उसमें इम्पॉर्टेंट है वो लाइनअप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के टाइम बहुत ही ईजी रहेगा उसको पढ़ना. सो बिगिन करते हैं. डाटा की तो मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज डाटा एंड सो ऑन. सो लेट बिगिन. At times, it becomes difficult to derive logical conclusions from used data if they are in raw form. Hence, it is important to ensure that the measured information is algorithmically derived or logically deduced or statistically calculated from multiple data. हम खुद देखते हैं कि टेबुलेशन किसी डाटा का होता है तो हम उसको इजीली ऐसे मतलब जैसे राम 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, नीचे श्याम सेकंड नंबर 20 मार्क्स, तो इजीली अपन उसको देख सकते हैं और इजीली एग्जामिन कर सकते हैं ना. लेकिन यही पैराग्राफ में लिखा होता है तो प्रॉब्लम आती है. यही अपन अगर आंसर लिखते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन पेपर के, जिसमें अपन लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स को पॉइंट्स में लिखते हैं. ये क्या है? डाटा को एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने का तरीका है. जो चेक करता है ना, उसको एकदम इतना टाइम नहीं होता, उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती है. सो वो क्या करता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेगा. और यहीं अगर पैराग्राफ में लिखा होगा तो उस पर उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा. सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और उससे निकलने वाला जो कंक्लूजन होता है ये बहुत इफेक्ट करता है और डाटा को समराइज भी करता है. नीड ऑफ डाटा. डाटा की नीड क्या होती है? लेट्स से टू स्टडी क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एन एरिया, इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन, irrigated area, amount of rainfall and inputs. These all have to be noted during the cropping pattern of an area. So these all are datas and their need is must. Presentation of data. इसमें आपको स्टैटिस्टिकल फैलेकी मैंने बताया था, हो सकता है वो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए. बहुत ही इजी है. बुक में आप उसको विद एग्जाम्पल थोड़ा सा पढ़ सकते हैं एक्सप्लेन करके. पेज नंबर 2. ओके, वी मे से दैट देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स. हेंस एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दीज डेज टू मेक द स्टडी more logical
and derive precise conclusion. Sources of data. The data are collected through the following ways. There are primary sources and secondary sources. So first, primary sources. Personal observation, primary sources में. It refers to the collection of information by an individual or group of individuals through direct observations in the field. In carrying out personal observations, the person involved must have theoretical knowledge of the subject and scientific attitude for unbiased evaluation. Interview. In this method, the researcher gets direct information from the respondent through dialogues and conversations. A precise list, objective of the survey, confidence building measures, simple language and gratefulness to the respondents should be taken care of while conducting an interview. Next, questionnaire schedule. Simple questions and their possible answers are written on a plain paper and the respondents have to tick mark the possible answers from the given choices. It is questionnaire. And when a questionnaire contains the questions pertaining to matter of investigation, it is schedule. एक क्वेश्चन है इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट है और बहुत बार देखा गया है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है ये, और हर बार लगभग देखा गया और सिंपल है, इजी है. आपको सामने भी दिख रहा होगा क्वेश्चनरी और शेड्यूल में डिफरेंस, ये देखा गया है, ये आ जाता है. तो वो डिफरेंस जो है वो एक बार नोट कर लेते हैं. क्वेश्चनरी में क्या होता है, रिस्पोंडेंट खुद है वो फिल करता है, उसको सिर्फ दिया जाता है पेपर. लेकिन शेड्यूल में ट्रेनर होता है, वो हर जगह सर्वे करके और पूछ के आस्किंग बाय आस्किंग क्वेश्चंस वो फिल करता है. तो इसलिए जो शेड्यूल है वो एक प्रोफेशनल फिल करता है, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत क्लियरिटी होगी और बहुत ही अच्छे से फिल करता होगा. नेक्स्ट है कि क्वेश्चनरी है वो लिटरेट पीपल जो पढ़ सकते हैं वही कर सकते हैं फिल. लेकिन शेड्यूल में क्या कि ट्रेनर फिल करता है, तो लिटरेट इलिटरेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता. कोई भी लोग हैं वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेन पीपल को दे देंगे एंड दैट वो है वो उसको शेड्यूल में शो कर देगा. सो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि क्वेश्चनरी ओनली लिटरेट पीपल कैन एबल टू फिल, बट शेड्यूल बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्यूमरेटर. सो मूव ऑन. अदर मेथड्स जैसे कि फील्ड सर्वेज, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है. Field surveys about the properties of soil, water, crops and vegetations considered as other methods. Secondary sources of data. Published sources and unpublished sources. Published sources. Government publications such as Census of India, reports of National Sample Survey, weather reports of Indian Meteorological Department, etc. Next, semi-government publication such as reports of urban development authorities and municipal corporations. Third है international publications such as yearbooks, reports and monographs by United Nations, UNESCO, UNDP, WHO and Food and Agricultural Organization. Fourth है private publications such as yearbooks, surveys, research, reports and monographs. And then fifth and sixth are newspaper and electronic media and magazines. And unpublished sources, इसमें भी government documents. These documents are prepared and maintained as unpublished record at different levels of governance. For example, the village level revenue records maintained by the patwaris. Second है quasi government records such as the periodical reports and the development plans by municipal corporations. Perfect. And the last जो है वो है private documents such as records of companies, trade unions, different political and apolitical organizations and resident welfare associations. अब चलते हैं आगे. Tabulation and classification of data. One of the simplest device to summarize and present the raw data is the statistical table. It is a systematic arrangement of data in columns and rows. Next है data compilation and presentation. इसमें आपके छोटी छोटी चीजें वो आपसे पूछ ली जाती है, जैसे कि absolute data. तो
When data are presented in their original form as integers, they are called absolute data or raw data. नेक्स्ट है परसेंटेज या रेशियो. सो ये भी कभी कभी हो सकता है कि निकालने को बोल दें, तो ये कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं. इट कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन्स फॉलोइंग द पैरामीटर इनटू 100 डिवाइडिंग बाय टोटल पॉपुलेशन. जैसे कि लिटरेसी रेट निकालनी है और लिटरेट पीपल निकालने हैं, तो टोटल लिटरेट्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वो लिटरेट पीपल आ जाएगा. नाउ इंडेक्स नंबर, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है. वो अपन ने देखा था, शोज चेंज इन वेरिएबल्स. एन इंडेक्स नंबर इज द स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक. जैसे इस टाइम से इस टाइम में लिटरेसी में कितना फर्क पड़ा, या पॉपुलेशन में कितना फर्क पड़ा, ग्रोथ हुई या क्या हुआ, तो वो सब जो है ना उनके नंबर चूज करना, दैट इज द इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है? प्रेजेंट ईयर डाटा इंटू 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर डाटा. ये आपको कैलकुलेशन के साथ टेबल नंबर 1.3 ऑन पेज नंबर 7 एनसीईआरटी में दिखेगा. बहुत ही इजीली समझाया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा रिक्वायर्स देयर टेबुलेशन and classification in selected classes. Processing is simple. Grouping of data. Grouping of data took place by determining number of classes in which the raw data are to be grouped and the class intervals. Tabulation करते हैं ना अपन, उसमें class intervals बनाते हैं कि हाँ 0 to 10 मार्क्स के 0 to 10 तक क्लास में कितने जने मार्क्स लाए हैं, 10 to 20 कितने जने मार्क्स लाए हैं, तो उसमें 11, 12, 15 सब आते हैं. तो वही है. इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड्स है वो कुछ है, जैसे 4 and क्रॉस मेथड और टेली मार्क रिप्रेजेंटेशन एंड इंटीग्रल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर सम मेथड्स फॉर ग्रुपिंग द डाटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टर्म्स पूछी जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो इजीली वैसे हो जाता है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, it illustrates how the different values of a variable are distributed in different classes. Distribution of frequency, जैसे 0 to 10 मार्क्स के क्लास में 4 बच्चे इसके बीच में रेंज में मार्क्स लाए हैं, 10 to 20 क्लास में 5 बच्चे इस रेंज में लाए हैं. That is the tabulation and frequency distribution. It illustrates how the different values of a variable are distributed in different classes. Next है cumulative frequency. Cumulative frequency से पहले simple frequency कर लेते हैं. Simple frequency, it is expressed by f and represent the number of individuals falling in each group. The sum of all the frequencies represent the total number of individual observations in the given series, and expressed by the symbol m or sigma f. Now cumulative frequencies. Cumulative frequency expressed by cf and can be obtained by adding successive simple frequencies in each group with the previous sum. अच्छा, the last cumulative frequency, it is equal to sigma f. Advantage of cumulative frequency is that one can easily make out less than and more than scores. Next जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो अपन बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, टेक केयर.